So, good morning to everyone. We have in the last session of your class, we have been completed with your prisms, isn't it? Yes sir. So let us try to go for the next topic right now. सर वो प्रॉब्लम्स में लास्ट के 2 प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रहे सर. कौन से वाला ये वाले? नहीं अभी अपन करे नहीं, अभी 5 प्रॉब्लम्स बाकी है अभी. किसमें बेटा? ये आप क्वेश्चन सेंड करे थे ना, ये इसके बाद वाले. अच्छा ठीक है, इसके बाद कर लेंगे फिर एक बार देख लेते हैं, ठीक है? ठीक है सर. Write the next heading बेटा. Refraction from curved surfaces. Refraction from your curved surface. ठीक है, मान के चलो अपने पास एक कर्व सरफेस है इस तरह से, and this one is your principal axis and this is the pole of the lens. Okay, इसका refractive index mu2 and here the refractive index is mu1. This is your rarer medium and this one is your denser medium. इसका center of curvature यहाँ पर होगा C. ठीक है, now when object is in the rarer medium, यहाँ पर कहीं पर मेरे पास object है, वो a ray of light from this one will be incident on this surface like this. So here represents me the angle of your incidence with respect to the normal. Normal कैसे draw करेंगे बेटा? We'll be drawing a normal such way that it is perpendicular and passes through the center of curvature. तो ये बनेगा मेरे पास angle of incidence. And this is at a height of from this mirror, मान के चलो small height है, that is nothing but equal to your h. And this is making an angle, say for example alpha. And this distance is known as of your objective distance, that is nothing but equal to your u. And you know that when a ray of light is been moving from rarer medium to denser medium, it bends from where? Towards the normal. Towards the normal. So from this one, it will bend towards the normal and the image formation will take place somewhere here right now. So this is your image formation and this is making a small angle, मान के चलो beta. Angles are very, very small beta. So tan alpha and tan beta can be taken as of your alpha and beta. Alpha and beta. This will be image distance, that is nothing but of your v. ये हो गया मेरे पास radius of curvature, that is nothing but equal to your r. Clear? Yes Not sir. having the relation beta, so that is of no use also basically. तो मैं directly इसका result लिख रहा हूँ basically यहाँ पर देखो. So now going from rare medium to your denser medium, so refractive index of your mu2 by your image distance v minus of your mu1 by your u is equals to your mu2 minus mu1 divided by your capital R. This will be the basic formula when you're moving from rare medium to your denser medium. What is mu1 beta? Mu1 is nothing but of your medium from which light is been coming. Mu1 is nothing but what? Yes. So mu1 is nothing but for that medium for which from where light is been coming. So medium from which light is coming or light is incident. Okay. And what is your mu2 beta? Mu2 will be equal to medium in which refracted ray goes. Is it clear? Yes sir. Okay. Then even if you're going from denser medium to rarer medium, just change the subscripts better. Just change the subscripts. Okay. Yes sir. So this is for your rarer medium to your denser medium. This is for my rarer medium to denser medium. If I'm going from denser medium to rarer medium, say if I'm going to your rarer medium, just change the subscript there right now. So what will be writing in the place of mu2? Will be writing mu1 by your v minus of this will become for me mu2 divided by your u is equals to your mu1 minus of mu2 divided by your capital R. So this will be the basic form. Clear? Yes sir. Sure, very. Next and very important one is lens makers formula. Lens makers formula. Lens makers formula. याद है? What is the lens makers formula beta? 1 by your f will be equal to your refractive index of mu2 divided by mu1 minus of your 1 into your 1 by your r1 minus of 1 by your r2.
R2. 1 by what is 1 by f for the lens beta? 1 by f will be equal to your 1 by v minus 1. by U. This one is known as of your lens Lens formula. formula. This one is your lens formula. Mirror formula will be equal to how much beta? 1 by v plus of your 1 by u. Isn't refractive index of mu2 by mu1 मतलब क्या? Refractive index of mu2 mu1 मतलब ऐसे लिखेंगे. That is nothing but if your mu2 divided by mu1. U1. Air, for air, mu1 is taken as of your 1 and mu2 is taken as of your mu. Mu. Therefore, 1 by focal length of your air will be equal to your mu2 minus mu1 will become how much beta? Mu minus of 1 into 1 by r1 minus of your 1 by your r. Clear? Yes, sir. चलो, ये दूसरा फॉर्मूला जो अपने को याद रखना है. बेसिकली लेंस फॉर्मूला तो आ गया. अगर इसमें से मुझे इमेज निकालना है तो v will be equal to how much beta? U into your f divided by your u plus of your f. So this will be the image formation application. ठीक है ना. साइन कन्वेंशन will be same again beta. साइन कन्वेंशन will be the same. एक छोटा सा मैं प्रॉब्लम बता देता हूँ. देखो, मान के चलो I got this question. Say for example, we have a double convex lens. Double convex lens. I'll tell you what are the different types of shapes of the lenses. बेटा यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर भी एक बार देख लो रफली. तो ये हो गया मेरे पास. अगर if the lens is this one like this, okay, this one is your radius of curvature right now बेटा. तो अगर ये देखो, this is made up of part something. अगर ये part होता तो this might have been the circular path बेटा, isn't Yes, it? sir. और इसके लिए ये circular path होता, isn't it? रे Yes. ऑफ लाइट जो डायरेक्शन में आ रही है, ये डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट आ रही है, ये डायरेक्शन में रे ऑफ लाइट आ रही है. तो इसके लिए ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा बेटा. सो यहाँ से यहाँ तक ये बन जाएगा मेरे पास r1. दिस इज योर r1 एंड फ्रॉम हियर टू हियर दिस विल बिकम फॉर मी इक्वल टू योर r2. In the direction of ray of light, the sign convention will be positive. That means r1 will be positive for this one and r2 will be the negative, isn't it? All Yes, the sir. distances are to be measured from the pole. In the Pole. direction of light है तो radius of curvature positive, r2 is in opposite direction to the ray of light, that is the reason negative, Negative. isn't it? If r1 is equals to r2 is equals to r, it is known as of what beta? Biconvex lens. Biconvex, और इसको हम लोग equiconvex lens भी बोलते हैं. It is also called as what? Equiconvex lens. The shape of the lens will be exactly same, but only thing is right now for me what? Here the r1 and here the r. Sorry, this is your r and this one is also your r. Clear? Yes, sir. Chalo. If this is the plane surface right now and this one is a curved surface right now, like this. So this one is known as of what? Plano convex lens. Convex lens. When a ray of light is being incident on this one beta. On the plane surface, there is no refraction, so it will go straightly and it will incident here right now. And from here, it will try to converge. Okay, na? Yes, sir. Yes, So sir. now for the plane convex, for the plano convex lens right now, it is first touching the plane surface, isn't it? So Yes, sir. r1 will become how much for me? Infinity, and r2 will become for me how much? Minus r. Minus R. So focal length will become for me 1 by f is equals to mu minus 1 into 1 by r1 is of your infinity minus this one is minus of your r. So 1 by infinity is how much beta? 0. तो ये कितना बन जाएगा? माइनस ऑफ माइनस से प्लस, तो ये बन जाएगा मेरे पास r. So focal length will become how much for me beta? R by your mu minus of your 1. Clear? Yes, sir. Sign convention. तो उसी तरह से if I'm going for the next one like this. बेटा मम्मी बुला रहे थे. अगर ऐसा हो तो this one is nothing but what type of a lens beta? Concave or convex lens. Concavo convex lens. Concavo convex lens.
इसका radius of curvature r1 होगा, this one will be r2, and here r2 is more than right now for me r1, which will be greater than 0. Clear है? And sign convention के लिए क्या हो जाएंगे बेटा? r1 is equals to positive Positive. and r2 is also equal to your positive. Positive. Clear? Yes, sir. चलो very good. Next one is concave lens. अगर हम लोग बात कर रहे हैं इस तरह से, like this, Biconcave. this is your pole P. So this is also called as of what beta? Double concave lens, or also called as of what beta? General lens, because इसका radius of curvature यहाँ पर r1 होगा. This one is nothing but r2. इसका refractive index is nothing but your mu1. Here r1 is lesser than 0 beta and r2 is greater than 0. That means if a ray of light is coming from this one in this direction right now, this is a pole, isn't it? So generally what happens right now for this one? We get divergent like this. Clear? Yes, sir. Connection for this one beta? For this one it is an r1, opposite direction of this one. So r1 will be here negative and r2 will be equal to your positive. Positive. ठीक है ना? Yes, sir. So in the next one is of your plano concave lens. If I'm drawing the plano concave lens, this is something like this. One surface is your plane and this one is right now like this. Isn't it? So for this Yes, one, R2 is becoming for me infinity and R1 is equals to negative because the ray of light is being incident on this one like this. Clear? So Yes. R1 is equals to your for this one negative and R2 is equals to positive. Agar lens aisa hota, so then this would have been something like this. R1 infinity. This one is your R2 and this one is your R1. So here R1 will be infinity, R2 will be your positive. ठीक है ना? Yes, Next sir. one. Next one is if I'm talking about your equiconcave lens. Equiconcave lens. What is the condition for this one beta? R1 must be equal to minus Equal R to R. and R2 must be equal to plus R. If the radius of curvature on both the sides are same, but only thing is sign conventions are different. So for this one is right now R1 is equals to R and R2 is also equal to your R. R. One R2 is nothing but here right now. This side it will become positive and this side it will become negative because the ray of light is coming in this direction and all the distances are to be measured from the pole like this. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Next one is about your convexo concave lens, isn't it? So this will be something like this. Okay, so this will be your R1 and this one will be R2. Here R1 will be greater than R2 and this will be greater than of your 0. Now tell me what will be the sign convention for this one beta? Both of them are in the same direction. So R1 is equals to positive and R2 is also equal to your positive. Positive. Yeah. Yes, sir. Chalo, very good. So छोटा सा क्वेश्चन दे रहा था ना मैंने आपको. प्रिज्म्स हो गया ना अपना? Yes, sir. असाइनमेंट्स भेजा था क्या मैंने आप लोग को? Yes, sir. एक भेजे थे, फिर अपन वो क्लास में कर रहे थे, वो प्रॉब्लम्स करे, फिर बस 5 बचे थे अभी लास्ट के. ठीक है, कर देंगे, वो भी हो जाएगा बस. ठीक है? जी हाँ सर. डबल कॉन्वेक्स लेंस, double convex lens are to be manufactured from a glass of refractive index 1.55 with both faces of same radius, with both faces of your same radius of curvature. What is the radius of curvature required
what is the radius of curvature required if focal length is 20 centimeters. चलो जल्दी से देखो, डबल कॉन्वेक्स लेंस बोल रहा है. What do you mean by double convex lens बेटा? Convex. Double Both sides convex are convex. lens. Yeah, this one is your double convex lens like this, isn't it? So this one is your R1 and this one will be your R2. R2 will be R and R1 will be also R. So if I'm writing the formula, 1 by F is equals to mu2 by your mu1 minus 1 into this one is 1 by R1 is nothing but equal to your R minus this one is 1 by R. minus of your Minus. R. So ये Yes. कितना बन जाएगा? This is your 1 by F, that is equals to, this one is your mu1 is equals to 1 and this is for the length, mu2 is equals to mu. तो ये बन जाएगा mu minus 1 into this one will become for me how much? 2 by R. Yes. What is asking the radius? What is the radius of curvature is asking. So R value is equals to how much? So R value will become for me how much? R इधर चले जाएगा, इधर चले जाएगा. 2 times of your F into your mu minus 1. So this will be the radius of curvature. So R is equals to 2. Focal length कितना दिया बेटा? Focal length is given how much for 20 me? centimeter. 20 centimeter दिया रखा है ना. Focal length is 20 centimeter. This is your 20. Refractive index कितना दिया हुआ है? 1.5. 1.55. So this one will be 1.55 minus 1. तो ये हो गया कितना? 40 into this will become for me 0.55. 0.55. So this you simplify, you get the radius of curvature. आ Yes, गया sir. समझ में? Yes, sir. चलो. Next one is longitudinal magnification. Longitudinal magnification. Okay. अगर मैं मिरर के बारे में बात करूं, so this one is say for example, this is a principal axis and it is silvered on this side. ठीक है. So object is being kept somewhere here. This is say for example of your object. This is your A and B. तो यहाँ से अगर यहाँ तक मैं ले रहा हूँ, so this will represents me the object of your A. अगर if I am taking the distance from here to here, this will represents me the object of your B. And say for example, its image is formed somewhere here, beta. Okay, this one is say for example B dash, and this one is say for example A dash. You know that object and image will coincide if the both of them are where, beta? At the radius of curvature. अगर R के पास है तो both of them will be coinciding. That वो अपने को याद रखना है basically. So from here to here, this will be representing me the image of your A, and from here to here, this will be representing me the image of your B. Clear? So longitudinal magnification will be equal to your A dash B dash divided by your A into B. है कि नहीं? Image by your object. So my longitudinal magnification will become for me VB minus of your VA divided by your UA minus of your UB. Clear? Yes, sir. For short objects अगर हम लोग बात कर रहे हैं, for your short objects, longitudinal magnification will be equal to dV by your du. ठीक है? Yes, sir. Now for concave mirror, if I am talking about, for a concave mirror, longitudinal magnification will be equal to minus of V square by U square. And for a convex mirror, longitudinal magnification will be equal to your V square by U square. Very important formula बेटा. Concave के लिए negative sign है, convex के लिए negative without negative sign. Positive. ठीक है? Yes, sir. Sure. This one is for lens, but not mirror. This is for your lens. Concave mirror के लिए negative है, convex lens के लिए कितना है? V square by your U square. ठीक है? Sure. This is for your mirror. This is your concave mirror, and this is for your convex lens. Sir, फिर concave lens के लिए? Same रहेगा, both of them. Concave के लिए और convex के लिए condition क्या हो जाएगा? It will be one and the same. Because हम लोग differentiation कर रहे हैं ना. So differentiation कर रहे हैं, so that will remain for me the same. Even for here convex lens and concave lens, it will be one and the same for this. ठीक है? Okay, sir.
चलो नेक्स्ट वन देख लो यहाँ पर, कॉम्बिनेशन ऑफ, सॉरी, combination of thin lenses, combination of your thin lenses. First one, if both the lenses are in contact, beta, isn't it? In contact hai agar both the lenses, like this. Okay, power of this one is P1, power of this one is P2, focal length is F1, focal length is F2. So in the contact combination, power will be equal to how much, beta? P1 plus of your P2. P2. Now P should be taken with the sign conventions, beta. Make sure of that one. Okay. Concave के लिए positive, convex के लिए positive, concave के लिए negative. और effective focal length will become how much for me? 1 by F is equals to your 1 by F1 plus of your 1 by F. Yes, Clear? sir. Next one. अगर दो lenses separated है, somewhat like this. ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, दोनों के बीच में की दूरी मान के चलो d है. This is a power P1, for this one power is P2. This is a focal length F1, this is a focal length F2. So effective power कितना बनेगा? This will be equal to P1 plus of your P2 minus of your d into P1 into P2. इसका डेरिवेशन है, बट फिलहाल अपने को जरूरत नहीं है. So directly application लिख रहे हैं हम लोग. When the lenses are at a certain distances, then P will be equal to P1 plus P2 plus of your P3. Clear? And effective focal length will be equal to how much, better? 1 by F is equals to 1 by your F1 plus of your 1 by F2 minus of your d by your F1 into your F. यहाँ तक तो clear हो गया होगा आप लोग को. Yes, sir. Reciprocal of the focal length is known as of your power. Unit is diopter, represented by letter capital D. D. Isn't it? Unit is yes, diopter, sir. Represented by your capital D. So ये हो गया when they are separated by certain distance particulation. Clear? Yes, sir. चलो. Next one is about your cutting of lenses. Cutting of your lenses. So I'm talking about cutting of lenses. This is, say, for example, a convex lens, and if I'm cutting the lens along the vertical like this, focal length of this one is F, power of this one is F. So now it is cut here right now. So when it is been cut along this one, so this is something like this. This is one plane surface right now here like this. And yes, here there will be your another plane surface like this. So it is forming a plano convex lens. So yes, focal length will become for me double, that is 2F. And power will become for me P by. Okay. Again, yes, this is further cut like this into 4 pieces like this. Okay. So focal length of this one is also 2F. 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 There is no change in focal length when you are cutting it along the principal axis particulation. Is that clear? Yes, sir. That is the clear condition. चलो और एक देख लेता हूँ मैं basically. Second one देखो. This is your equiconvex lens. Okay. Now I am cutting this one along the axis like this. Okay. So yes, when I'm cutting like this, so this will be a combination right now. One will be equal to your like this upper part, and this one is also your another part like this. So before cutting इसका focal length मान के चलो F था. So this one also it will become F for me F, and this one is also becoming for me F. Yes, clear? Sir. Yes, okay, sir. Now if I'm keeping like this बेटा, ये हो गया इस तरह से और ये हो गया इस तरह से. इसका पावर हो जाएगा P, इसका पावर हो जाएगा P. So total power will be equal to how much better? 2 times of P. P. Focal Yes. length of each will become how much better right now for this one? F dash will become for me or F by 2. बोलो क्यों? Principal. दोनों effective combination में Side-wise 1 by F dash will be equal to 1 by F plus 1 by F. तो ये बना कितना? 2 by F. This is your 1 by F dash. तो F dash कितना बन जाएगा? F dash इधर चले जाएगा. F यहाँ पर 2. इसलिए F dash is equal to F by 2 है. समझ में आया? Yes, sir.
अगर ये कॉम्बिनेशन इस तरह से रखते हैं हम लोग, like this, and this one is like this, isn't it? So power will be Yes, equal to how much beta? इसका opposite हो जाएगा, net power will yes. become 0 and 0. focal length will become for me infinity, Yes, sir. isn't it? Yes, sir. Next one. अगर मान के चलो we are having the lens like this, and this one is cut into your n number of refractive indexes like this. This is like mu1, this one is like mu2, this one is like mu3, this one is like mu4, this one is like mu5. So total number of images will be equal to how much beta? 5. Number of focal lengths will be equal to your number of your different medium, है कि नहीं? Yes, sir. तो जितनी मीडियम रहेंगे उतने नंबर ऑफ इमेजेस, सो नंबर ऑफ योर इज इक्वल्स टू योर number of images, so that will be equal to 5. जितने refractive index, that many number of your images will be formed. Okay. Yes, sir. If the lens is like this now, and if it is having the refractive index here mu1 and here is equals to mu2, this has how many focal lengths beta? One single focal length only, na? Yes, sir. So this has single focal length, F5. so single focal length, so only one image. Yes, sir. Okay, if it is been cut it in the vertical part, the number of images will be for me same, number of images will be the same. Now tell me the answer for this one. If this is your lens like this, okay, now I'm cutting this one like this, and also I have like this. Or this one is, say for example, mu1, this one is mu2, this one is mu3, and this one is mu4. Number of images batao. 4. हाँ, ये ऐसा अगर मैं वर्टिकल किया तो 2. हाँ, तो ये वाला ही काउंट होगा, नंबर ऑफ इमेजेस विल Yes, बी 2. 2. क्लियर है? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. इसका बताओ, सोच के बताओ. मान के चलो दिस इज योर वर्टिकल सेक्शन, यहाँ पर ऐसा हॉरिजॉन्टल है, ये वाली mu1 है, ये वाली mu2 है, फिर ये mu2 है, ये वाला mu1 है, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे? Two. नहीं, देखो ये mu1 है, Yes. टू है, mu2 है, mu1 है. अगर दोनों ऑपोजिट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएंगे तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी वन ओनली, क्योंकि एक ही फोकल लेंथ आएगा. Yes, 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 yes. नंबर ऑफ इमेजेस विल बी इक्वल टू 1. अगर ऐसा क्वेश्चन आया ना सब्जी ने रे ऑप्टिक्स में, सीधा सीधा उल्टा मार के आते, इतना साल भर पढ़ने का वेस्ट हो जाए. छोटा सा क्वेश्चन, कल नीट में अगर ऐसा वाला क्वेश्चन पूछ दिया, समझो 90% बच्चे लुढ़क के आते, है कि नहीं? Yes, sir. कितना छोटा क्वेश्चन है देखो, समझ में आया? कटिंग ऑफ लेंसेज Yes, का भी sir. है सभी को. यहाँ पर 1 क्यों हुआ देखो, ये बेटा ये mu1 है, ये mu2 है, फिर Yes, ये sir. mu2 है, ये mu1 है. Yes, sir. मतलब क्या, यहाँ पर mu2 है, mu1 पूरा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, नलीफाई हो जाएगा, तो एक ही Yes. फोकल लेंथ आएगी. Yes. क्लियर? Yes, sir. चलो, वेरी गुड. So that was about your lengths part affiliation and their combinations part affiliation. Clear होना यहाँ तक सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चलो, very good. अभी क्या बच गया बेटा? Optical instruments है शायद. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अभी तो फिर टाइम लगेगा बेटा वो, क्योंकि अभी आधे घंटे में तो नहीं पढ़ा सकते. और कुछ कॉन्सेप्ट्स बचे, प्रिज्म्स, dispersion without dispersion, deviation without dispersion also we did. Yes, So sir. also we have done it. चलो, एक क्वेश्चन कर लो जल्दी से, रफली एक रफ पेपर ले लो. मान के चलो this one is your lens, sorry, this is your
लेंसी मान के चलो, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज से फॉर एग्जांपल 6 सेंटीमीटर्स। ये यहाँ पर कहीं पर मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर्स, और यहाँ पर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5। एंड एयर का तो जनरली मालूम है, तो मुझे बताओ इमेज कितना हो जाएगा। आई एम गिविंग यू द ऑप्शंस। फर्स्ट ऑप्शन इज 20, second option is 45, third option is -45, fourth option is 30. क्या क्या दे रखा है पहले ये बताओ। μ1 कितना हो जाएगा बेटा? 1 μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, μ2 1.5 1.5। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। -20 सेंटीमीटर। यस, -20 सेंटीमीटर। तो पोल लेना है, तो हम लोग Yes, निकालना क्या है? इमेज। तो फॉर्मूला क्या Yes. लगाओगे? μ2 by μ2 your by v v minus μ1 μ1 by by your u u equal to is μ2 equal to minus μ2 minus by μ1 r divided by your radius of r। curvature। हाँ, तो ये हो गया मेरे पास 1.5। इमेज अपने को निकालना है, that is equals to minus this one is nothing but 1 divided by -20, that is equals to 1.5 minus 1 divided by radius of curvature कितना दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। So this will become for me 1.5 divided by v minus this will become for me plus this is 1 by 20, that is equals to 0.5 0.5 by 6 1.5 divided by 2 यानी 1 by 12। ठीक है, 0.5 ना बेटा, 1 by 2, यस सर। 2 into 6 12, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1.5 डिवाइडेड बाई वी दैट इज इक्वल्स टू 1 by 12। ये इधर चले जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा 1 by 20। तो 1.5 मतलब कितना? 3 by 2 टाइम्स ऑफ वी दैट इज इक्वल्स, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। दिस विल बी 5 माइनस ऑफ योर 3, 5 minus 3 मतलब 2, 2 by your 60, 2 by your 60, तो ये हो गया कितना? 2 1s 2 3s, ठीक है ना। So this will be equal to 3 by v is equals to 2 by 30, होता है ना? यस सर। तो इमेज कितना बना बेटा? v will be equal to 3 into 3, this will be 90 divided by 2, 90 divided by 2 means 45 centimeters। पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। तो आंसर should be equal to your 45। आ गया? यस सर। चलो और एक बता देता हूँ जल्दी से, इसमें कैलकुलेशंस मायने रखते हैं बेटा, और जल्दी करना वो ज्यादा मायने रखता है अपने। ये फिर से एक बार पेंसिल मेरे पास, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है मान के चलो r, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, और ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर कहीं रखा हुआ है, दिस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ योर 5r, ठीक है ना। एंड इमेजेस मान के चलो राइट नाउ फॉर मी v इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ योर r, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इक्वल टू योर, सॉरी इज इक्वल्स टू योर n है, तो n वैल्यू इज इक्वल्स टू योर हाउ मच? ओके, तो इसका भी ऑप्शन दे देता हूं मैं। ऑप्शन इज 5, सेकंड ऑप्शन इज 6, थर्ड ऑप्शन इज 3, फोर्थ ऑप्शन इज 2। क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। ये लेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 5r, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, इमेजेस n टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो n वैल्यू इज इक्वल्स टू हाउ मच? अगेन द रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? mu2 by your v minus of mu1 by your u is equals to your mu2 minus mu1 divided by radius of curvature। यस सर। तो mu2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 1.5। mu1 की वैल्यू कितनी है? 1। सो नाउ जस्ट राइट द वैल्यूज। 1.5 डिवाइडेड बाय इमेज कितना दे रखा है? v is equals to n times of r, so this one is your n times of your r। object distance will be equal to how much beta? How much is the object distance given for me? -5r equals to minus of 5 into r, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस प्लस लिख दूं डायरेक्टली, प्लस 1 by 5 into your r is equals to 1.5 minus 1 divided by your r, तो ये बन जाएगा 3 times of your n into r, प्लस ये हो गया 1 by 5 times of your r, that is equals to 1.5 minus 1 is nothing but 0.5 divided by r। तो सीधा सीधा r तो कटते हुए दिखाई दे रहा आपने को, ये r चले गया, so this will be equal to your how much? this will become for me 3 by 2 times of your n, तो ये इधर चले जाएगा, तो कितना बन जाएगा? 1 by 2 minus of 1 by 5, होता है ना। तो इसका एलसीएम कितना बन जाएगा बेटा? 10, तो ये हो जाएगा 5 minus 2, that will be equal to how much? 3 by 10, isn't it? ये हो गया 2 1s, ये हो गया 2 5s, so this is 3 by n will be equal to 3 by 5, तो n will be equal to how much बेटा? 3 5s 15 divided by 3, कितना? 3 ना, that will be equal to 5, so n की वैल्यू कितनी बन गई? 5। क्लियर है? यस सर।
So that was about the image distances जैसा हम लोग को करना है basically. Is it clear? Yes, sir. चलो. And one more formula beta, very important. Magnification of the lenses can also be written as beta. Magnification for the lens will be height of image by your height of object for lenses. Refractive sir. index में लिखोगे तो क्या हो जाएगा? This will be V by U into your. In terms of refractive index, it will be mu1 by your mu. ठीक है? Yes, sir. So in terms of your refractive index, the magnification of your lenses is either m is equals to height of image by height of object, or that is equals to V by U into your mu1 by your mu2 part of relation. mu2. Is it clear? Yes, sir. ये भी एक क्वेश्चन बढ़ा देता हूँ बेसिकली. देखो, मान के चलो this one is your lens and here is somewhere your object. The object का height है मान के चलो 0.5 centimeters and it is kept at your 30 centimeters. ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर से 1.5 है and इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है say for example 10. So height of your image will be equal to your how much? That is our question. Height of your Yes, sir. image is equals to how much? Option is -1, second one is your +2, third one is your +1 and fourth one is your -2. क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. Isn't it? Height of object is 0.5, object distance is for me 30 centimeters. We need to calculate the height of your image. तो अपने पास इमेज नहीं है अपने पास, so अपने को इमेज भी फाइंड आउट करना है. So object distance दे रखा है. The ray of light is going from rarer to denser medium, so I can apply the formula mu2 by your V minus of your mu1 by your U is equals to your mu2 minus mu1 divided by capital R. mu2 की वैल्यू कितनी है? 1.5. इमेज नहीं दिया तो we need to calculate the value of image minus this one is 1 divided by object distance is minus of 30, that is equals to 1.5 minus 1. Radius of curvature is given as 30. Clear है ना? Yes, sir. 1.5 is nothing but 3 by 2 times of your V, that is minus of minus, this will become for me 1 by 30, that is equals to 1.5 minus 1 is 0.5, 0.5 divided by 10 will be equal to how much? 1 by 20. So 20. it is a 3 by 2V will be equal to your 1 by 20 minus of 1 by 30. तो इसका अगर मैं LCM ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 3 minus 2. तो ये बना कितना बेटा? This one is 3 by your 2V will be equal to 3 minus 2 is 1 by your 60. ठीक है ना? So this is your 2 ones are, this one is 2 threes are. ठीक है, so V will become for me how much better? 30 into 3, that will become for me 90 centimeter. तो इमेज कितना है मेरे पास? 90 centimeters. तो अपने पास ये फॉर्मूला है राइट नाउ. व्हाट इज एन हाइट ऑफ योर इमेज मैग्निफिकेशन? हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ योर ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू योर, इट इज नथिंग बट इक्वल टू योर इमेज डिस्टेंस. इमेज कितना है मेरे पास राइट नाउ? V is equals to 90. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस will be equal to your -30. क्लियर है? into your Yes, sir. refractive index is nothing but mu1. mu1 की वैल्यू 1 है, mu2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 3/2. तो कितना आ रहा है देखो, ये 0 चले गया, 3 1 जा 3 3 जा. तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया रखा है? 0.5. 0.5 मतलब 1/2. 1/2 यानी ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ इमेज, यानी ये बना कितना बेटा? 3 2 जा 6, 6 by your 3 होता है ना? Yes, sir. So this one is 3 1 जा, this one is 3 2 जा. ये 2 और ये 2 चले गया, तो हाइट ऑफ योर 1. इमेज कितना आ रहा? हाइट ऑफ योर इमेज ये माइनस है ना, तो यहाँ पर भी माइनस Yes, होगा. -1. माइनस ऑफ 1 सेंटीमीटर आया. Yes, sir. आ गया. चलो, हाइट ऑफ योर इमेज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ योर 1 सेंटीमीटर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्लियर है? Yes, sir. चलो, एक क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई कर लो. Okay, sir. ये हो गया मेरे पास लेंस और ये हो गया फोकल लेंथ और यहाँ पर हो गया ऑब्जेक्ट. रे ऑफ लाइट इज बीन इंसिडेंट ऑन दिस वन लाइक दिस. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पर 1.5 एंड हियर इज राइट नाउ म्यू इज इक्वल्स टू 1. ठीक है, और ऑब्जेक्ट दे रखा है 50 सेंटीमीटर्स राइट नाउ हियर एंड इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है राइट नाउ 20 सेंटीमीटर्स. तो इसका इमेज कितना होगा और इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा? ठीक है, कर Okay, लोगे sir. ना? Yes, sir. चलो, वेरी गुड. वैसे वाले तो मैक्सिमम कर सकते हो बेसिकली, Yes, sir. isn't it? Yes, sir.
वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालने आता है बेटा? यस सर, बताए थे आप। वेलोसिटी ऑफ इमेज पर लेंसेस, फॉर्मूला क्या है अपने पास? μ2 by your v minus μ1 by your u is equals to μ2 minus μ1 divided by r. इसको Yes, अब sir. हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? देखो बेटा, 1 बाई यूर ये हो जाएगा v स्क्वायर इंटू दिस विल बी योर dv बाई यूर dt इंटू योर μ2, दिस इज माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ योर 1 बाई यू स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा du बाई योर dt, चेन रूल लगा रहा हूँ, इंटू योर μ1। ये पूरा कांस्टेंट होगा तो इसकी वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी। तो dv बाई dt कितनी आएगी? यहाँ पर देखो, dv डिवाइडेड बाई योर dt विल बी इक्वल टू ये हो जाएगा μ1 डिवाइडेड बाई μ2, क्योंकि ये μ2 इधर चले जाएगा, माइनस पूरा इधर है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू dv बाई योर dt इंटू μ1 बाई μ2 इंटू ये हो जाएगा v बाई योर u होल स्क्वायर, ये v है ना, ये v स्क्वायर इधर चले जाएगा तो v बाई योर u होल स्क्वायर इंटू योर, ये बन जाएगा मेरे को du बाई योर dt, ठीक है ना। So dv by dt is nothing but what? Velocity of image with respect to the pole. So that will be equal to μ1 divided by μ2 into your v square divided by u square into velocity of object. ठीक है ना? This one is what? Velocity of image with respect to pole of the lens. This one is the velocity of object. This one is your velocity of your object with respect to what beta? Pole. With respect to your pole. Is that clear? Yes, sir. तो मान के चलो अगर मैं इस तरह से ले रहा हूँ इसको, एक छोटा सा क्वेश्चन दे देता हूँ, देखिए। This is say for example a lens, and say for example this is a principal axis and this is your pole, and here is your object, and this object is moving like say with 2 centimeter per second square. Okay. Initial velocity v naught will be equal to 0. ठीक है ना? Yes, sir. की वेलोसिटी कितनी होगी जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी होगी? I'll write the question here. See, velocity of image at t is equals to 1 second. This is it. T is equals to 0 second के पास velocity of your centimeter per second square मतलब क्या होगा? ये एक्सेलरेशन होगा ना? Yes, sir. तो दिस वन इज रेडियस, इसका रेडियस मान के चलो 10 सेंटीमीटर। अपने को चाहिए क्या? वेलोसिटी ऑफ इमेज एट t is equals to 1 second. At t is equals to 0, the velocity of object is 0 and acceleration of that body is equals to 2 centimeter per second square. क्लियर है? Yes, sir. चलो करके बताओ जल्दी से इसको। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है अपने पास तो फॉर्मूला मालूम है सीधा सीधा। वेलोसिटी ऑफ योर इमेज विल बी इक्वल टू योर हाउ मच? वेलोसिटी ऑफ इमेज का फॉर्मूला क्या है? dv बाई योर dt इज इक्वल्स टू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान के चलो, लेंस के लिए ले रहा हूं मैं बेसिकली। जनरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है बेटा? लेंस के लिए हम लोग ले लेते हैं 1.5 और इसके लिए 1, ठीक है? यस सर। चलो ये टाइप ऑफ कौन सा लेंस है बेटा? कॉनकेव। सो dv by dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? μ1 by your μ2 into your this one is your v by u whole square into your du by your dt. So du by dt क्या देगा? dv by velocity of object, dt, isn't it? Velocity of your object. Lekin in the problem he has given for me 2 centimeter per second. So what will be the acceleration beta? A is equals to your, can I write du by dt? du by dt. Yes. A is how much for me? 2 centimeter per second square, isn't yes, it? Sir. So this will be equal to how much for me? Du by dt is nothing but equal to how much for me? A into t लिख सकता हूँ मैं क्या? देखो, at what time? Acceleration only ना? Yes, sir. Isn't it? So v is equals to your u plus of your a into t. Yes. Isn't it? So acceleration will be equal to how much beta? Change in velocity divided by your t. So v will be equal to how much for me? Object velocity, that will be equal to your a into your t. So du by dt will be equal to how much for me? A into your t. Can I write like that? Yes, sir. ठीक है, तो v is equal to कितना बन गया मेरे पास? आया कहाँ से बताओ मैं? ये देखो, v is equal to अपने मालूम है v naught plus a into t. This one will be equal to 0, isn't it?
So V can be written as right now for me what beta? So you V is equals to what right now? Velocity of your image. So velocity of Yes. image, if I'm differentiating du by your dt, that will give me what? Acceleration. Yes, sir. Clear? At certain given Yes. interval of your time. So that will be equal to your a into your t. Yes, sir. ठीक है, चलो तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, देखो दिस विल बी इक्वल टू mu1 is 1, mu2 is equals to 3/2 into image distance. I don't know the image distance. How much is the image distance बेटा? अब image distance तो नहीं दिया, तो I need to calculate the image distance also. How do you calculate the image distance बेटा? आगे हम लोग को फिर U2 image distance निकालना है. U2 by V minus mu. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं दे रखा है ना. नहीं दिए सर. चलो कुछ ले लेते हैं हम लोग 30 सेंटीमीटर्स, वरना नहीं आता बेसिकली. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होना पड़ेगा ना. ऑब्जेक्ट मैं रफली ले रहा हूँ बेसिकली बेटा. आई कैन यूज दिस वन एज 30 सेंटीमीटर्स. तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पहले मैं क्या करूँ, तो यहाँ पर एक लाइन मार्क यहाँ पर कर लेता हूँ. सो mu1 हो गया मेरे पास कितना बेटा? 1. और mu2 हो गया कितना? 1.5. करेक्ट है. 1.5. ऑब्जेक्ट कहाँ से जा रहा था? यहाँ पर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम. So for the this one I can write the relation right now. This will be equal to how much beta? Mu1 na. Mu1 will become for me Yes, 1.5. mu1 1.5. हाँ, तो mu2 mu1 will 1. become for me 1.5 and mu2 will become for me 1. 1. And object distance will be equal to minus 30. We can calculate the value of image. Radius of curvature is given as of your 10. ठीक है ना? Yes. Now what is the formula I'll be using beta? mu2 divided by your v minus of mu1 divided by u is equals to mu2 minus mu1 divided by r. ठीक है ना? You simplify it, you will be getting the image for this one. Okay? Yes, sir. So once we get that image value, I can substitute in this one right now in the above relation. So यहाँ पर v by u की value डाल दो. Objective distance is also given for me how much beta? Minus of your 30, इसका whole square बन जाएगा. du by dt is nothing but 2 into your this one will become to 1. So that will give me the velocity of object. ठीक है? Yes, sir. तो ये हो जाएगा dv by dt. कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ. We can do it out. So this will become for me 2/3. ये जो भी आएगा ये वैल्यू डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 30 का होल स्क्वायर इनटू 2. इसको सिंपलीफाई कर लो. दैट विल गिव मी द वेलोसिटी ऑफ. क्लियर है? Yes, sir. सो dv by dt is acceleration बेटा, नथिंग देयर. ठीक है ना? Yes, sir. पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम इज नथिंग बट ऑफ योर इमेज. क्लियर Yes, है? sir. चलो. Yes, sir. इसमें बबल वाले के भी प्रॉब्लम्स होते हैं बेसिकली बेटा. Yes. ऐसे वाले क्वेश्चंस वो हम लोग एनी एक्सरसाइज कर लेंगे. मैं आप लोग को एक एक्सरसाइज इस पे कराऊंगा एक्सक्लूसिवली. सो दैट विल बी द प्रॉब्लम. सो ये हो गया रफली द कंप्लीट रिवीजन ऑफ योर रे ऑप्टिक्स वन. इस पे हम लोग एक असाइनमेंट करेंगे. देन विल ट्राई टू गो फॉर द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. टुमारो आई विल ट्राई टू डू द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बेटा, मोस्ट प्रोबेबली. हाँ बेटा बोलो. ये रे ऑप्टिक्स के प्रॉब्लम्स है ना जो मैंने आप लोग Yes, के लिए sir. बताया था. तो यहाँ जी तक आ गया था. ये 4-5 प्रॉब्लम्स मैंने आप लोग के लिए छोड़ा था. Yes, sir. करे. लेकिन कैलकुलेशन लास्ट वाला नहीं आ रहा था सर. कौन सा नहीं आ रहा? बोलो तो जल्दी से मैं कर देता हूँ. एक मिनट अभी बोल रहे. 94th वाला सर. 94 वाला कौन सा भेजा है मैंने आपको? आप क्लास में कराए थे ना सर. इसमें कहीं नीचे रे ऑप्टिक्स से वेव्स रे ऑप्टिक्स क्लासरूम प्रैक्टिस. हाँ तो इसमें 40 है. हाँ 36 है, 40 है. उसके बाद 45 से नहीं कराया. 45. जी हाँ. 45 ना? जी हाँ वो कर लिए सर. 45 हो गया. जी हम आंसर बोल आप चेक कर ही नहीं कर. 45 बोलिए. आंसर कितना है? 0.0306. हाँ 0.03 अप्रोक्सीमेटली. नेक्स्ट वन 46 वाला 0.095. 0.095. वेरी गुड. ये भी उतना ही आंसर है. और 47th वाला 0.090. वो एंगुलर डिस्पर्शन है. और डिस्पर्सिव पावर 0.0277.
हाँ, तो फर्स्ट वन क्या है, एंगल ऑफ डिविएशन पूछा ना, ये एंगल ऑफ डिविएशन 3.25 आएगा, 47। हाँ डिविएशन का सर, फॉर्मूला क्या है, यस सर, यस इक्वल सर। टू LO माइनस हाँ 1 एंड इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म। LO मतलब मीन कलर ना, यस रिफ्रैक्टिव सर, इंडेक्स ऑफ रेड प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लू डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म आएगा, यस सर, यस सर। isn't it? So इसको वैल्यूज डाल दो, इसको you will be getting 3.25 डिग्रीज। एंड डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लू लाइट माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट डिवाइडेड रेड बाय लाइट बाय रिफ्रैक्टिव म्यू इंडेक्स आई माइनस 1। ऑफ 1। So that will be यस, equal to 0.028 आएगा। यस सर, और 0.02। कुछ, ये वाला 60 भी है ना, 60 यस सर। और वो 94 बहुत ही दिया मैंने आप लोग को। ये कितना है, 94th वाला आया। नहीं आया सर 94। 94 इज अ क्रिटिकल एंगल ना, यस सर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक बार क्रिटिकल देखो एंगल का ही है सर। हाँ हाँ, यहाँ पर देखो, ये वाला मेरे पास प्रिज्म है इस तरह से, ये हो गया इस तरह से, और ये हो गया इस तरह से, ठीक है ना। दिस यस एंगल इज सर, गिवन हाउ मच फॉर मी, और 60 डिग्रीज, एंड दिस वन इज योर नॉर्मल। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन दिस वन, तो ये एंगल कितने बन जाएगा मेरे पास, 90 डिग्रीज। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्रीज, तो ये 60 हो जाएगा, तो ये भी 60 डिग्रीज हो जाएगा, यस ठीक है ना। क्वेश्चन देखो, लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस ऑफ योर AB ऑफ ए प्रिज्म एज शोन इन फिगर, लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज बीन प्लेस्ड ऑन द फेस AC के ऊपर अभी हम लोग एक लिक्विड डाल रहे हैं बेसिकली यहाँ पर ऐसा। तो उसके बाद उसने क्या बोला, द प्रिज्म इज मेड अप ऑफ ए क्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 3/2। 3/2। Then the limit of mu for which total internal reflection take place across the face of your AC will be equal to how much? तो यहाँ पर total internal reflection होना चाहिए about this one. You know that will be possible only if it is your critical angle. So यस सर, going from क्रिटिकल। here, beta, air to your glass, then you are going from your air to your liquid, यस isn't it? So right यस now if I'm writing the critical angle for your glass and as well as of your liquid, ये हो गया मेरे पास glass और ये हो गया मेरे पास liquid. तो क्रिटिकल एंगल अगर मैं लिख रहा हूँ, so this is the refractive index of glass with respect to air into your sin of your C must be equal to refractive index of your liquid with respect to your air into your 90 degrees, sin of your 90, क्योंकि refracted ray है ना बेटा इस, यस सर, then angle of refraction will be equal to 90 degrees, and a refraction of glass with respect to air will be equal to how much for me, 3/2 3/2। into sin C. This will become for me mu of the glass. तो ये sin C will become for me how much, 2 उधर चला जाएगा, so this will be a 2 mu by your 3, यस isn't it? Now for TIR to happen beta, for TIR on the surface of your EC, यहाँ पर TIR होना है on the face of your AC. For यस that सर, one, this angle must be greater than or equal to critical angle. यस सर, That means this will be equal to sin of your 60 degrees must be greater than or equal to sin of your C. Sin यस सर, 60 मतलब कितना, 3/2. That must be greater than or 3/2। equal to sin C. Sin C value is equals to 2 mu by 3. तो ये कितना बन जाएगा, 3 into √3 divided by 2 into 2, this will be 4, that will be greater than or equal to your mu. यस सर, So mu will be equal to how much for me? Mu is lesser than or equal to 3 into √3 divided by 4. ये हो गया refractive index. यस सर, Clear है? यस सर। So First first option will be the answer. यस, उसके बाद हो गया सर, लास्ट था वही। इस पे आज एक असाइनमेंट भेजता हूं मैं बेटा। एंड इवन वन मोर थिंग आई एम प्लानिंग इज फ्रॉम मंडे हम लोग स्टार्टिंग चैप्टर से फिर एक बार क्रैश कोर्स कर लेते हैं बेटा, 90 डेज 100 डेज का जो भी हो, यस सर, खाली प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स फॉर्मुलेस लिख लेंगे हर चैप्टर के, एंड विल ट्राई टू डू 45 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच चैप्टर स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिट्स एंड डायमेंशंस यस डेली सर, एक ही चैप्टर, क्योंकि अभी मेरे पास पेड वर्जन है जूम का, तो हम लोग 1 आवर 1.5 आवर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 40 मिनट्स में रुक जाएगा ऐसा बोल के। सो आई थिंक अपने पास टाइम भी है और अपने पास सोर्स भी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले